and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, we're going to talk about Central Advisory Board of Education, that is KABE. KABE is an acronym for Central Advisory Board of Education. So in today's video, we're going to talk about what are the functions of KABE and when did it start. We'll be talking about the timeline, because this is a question that is being asked in M.Ed program. You are all preparing for your M.Ed 4th semester examination. So my dear educators, here you go. Central Board Advisory Board of Education, that is KABE. It is the oldest and the most important advisory body of the Government of India in education. And it was first established in 1920, 1920 में बनी थी, and then it was dissolved in 1923, but again revived in 1935 and has been in existence ever since. So the Central Advisory Board of Education is an important body, as I've already told you. Advisory, as the name defines, responsible for advising and assisting the Indian government. Right? Indian government को advise करती है, assist करती है for what? In formulating and implementing education policies. Policies को बनाने के लिए, education से related और इनको implement करने के लिए national level पर. And it serves as a platform for consultation and collaboration between the central and the state government. जो आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एनसीईआरटी से सपोज करिकुलम एक डिजाइन होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है एससीईआरटीज हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हैं, और उसमें अपना कल्चरल इफेक्ट्स अगर डालना है, रीजनल एग्जांपल्स डालनी है, दे आर फ्री टू डू दैट. बट उस एससीईआरटी और एनसीईआरटी यानी नेशनल एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन करवाने में, उनको कंसल्टेशन के लिए इट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म. And education experts, academicians and other stakeholders सबको एक platform provide करता है KABE. And the KABE plays a significant role in shaping the education landscape of the country through its various functions and responsibilities. वो कौन-कौन से functions हैं, कौन-कौन सी responsibilities हैं, we shall talk about all. First of all, let's talk about policy formation and recommendation. As I've already told you in my previous slide, like KABE plays a very crucial role in formulating education policies by discussing and deliberating on important issues related to education. What all important aspects related to education they are? For that, formulation and implementation of the education policy that is being done by KABE. And it provides a recommendation and suggestions to the government on policy matters, maybe curriculum development, teacher training, assessment, evaluation method. So all these different kinds of educational reforms related to that, it provides advices, right? It's because advisory board, so it provides advice to the government of India. Now, it also promotes access and equity. Access and equity, हमने last video में when we talk about the first point, right? क्या major issues हैं, क्या major concerns are related to education policy implementation in India. तो सबसे पहला point हमने discuss किया था access and equity. So KABE focuses on promoting access to quality education for all, irrespective of what that we all talked about, socioeconomic backgrounds, geographical locations, and it also works towards reducing the disparities in educational opportunities and ensuring inclusive growth in education sector. जब सबको education का access मिलेगा, equitable access होगा, obviously we can imagine the inclusive world, right? So for that, the role is being played by KABE, Central Advisory Board of Education, because it promotes this sort of access and equity. Now, monitoring implementation of policies, खाली policies बनाकर, rule बनाकर छोड़ नहीं देते हैं, उसके procedures बनाना, उसको implement करवाना, that is also being done by KABE. KABE monitors the implementation of various education policies. पहले policy बनाई है, फिर उसको implement कैसे करना है, that is also to be ensured by KABE, right? At which level? At state level and national level. It assesses the progress, identifies the gap, challenges and measures for the effective implementation. कि gap कहाँ पर है? As in my last video also we talked about कि rural और urban में कहीं ना कहीं digital divide है,
रिसोर्सेज के लिए भी वो चीजें रह जाती है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रॉपरली हो पाता, राइट। सो इसलिए कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड डिसएडवांटेज जो ग्रुप है तो उनको बाद में सफर करना पड़ता है। तो इस चीज के लिए इनके गैप का एनालिसिस करना, चैलेंजेस को फाइंड आउट करना, सजेस्टिव मेजर्स प्रोवाइड करवाना, that is being done by KABE. So that is the another function. Now research and evaluation. It encourages research and evaluation in the field of education, and it promotes studies and research initiatives to generate evidence-based insights and recommendations for policy making. अब पॉलिसी जब बनाएंगे उससे पहले रिसर्च भी तो करेंगे, उसको evaluate करेंगे कि नीड क्या है पॉलिसी बनाने की, कौन सी पॉलिसी बनानी है, राइट, क्या जरूरत है पॉलिसी बनाने की, और पॉलिसी अगर बनानी है उसका एजेंडा क्या रहेगा, इंप्लीमेंट कहाँ करानी है, कैसे शुरू करनी है. सो फॉर दैट रिसर्च एंड इवैल्यूएशन इज ऑल्सो बीइंग डन बाय KABE. Now, stakeholder engagement. KABE facilitates engagement and collaboration among various stakeholders in education sectors. Maybe they are government officials, academicians, teachers, parents, students. So, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस पर कि ये सारे डिफरेंट जो stakeholders हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, they can exchange ideas, right? So, कैसे कर सकते हैं? Because it organizes various webinars, seminars, right? Such kinds of events where it invites all the students, parents, academicians to come and collaborate, share their views on particular topic or maybe research presentations, and all the same is being done, right? So it fosters stakeholder engagement. If we talk about budgetary recommendations, KABE plays a role in making budgetary recommendations for the education sector कि एजुकेशन सेक्टर में क्या फाइनेंस को एलोकेट कितना करना चाहिए, एडुकेट सपोर्ट कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड है, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स कौन कौन से लेने चाहिए, राइट. तो उस चीज के लिए व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स दे आर. सो केब plays a very important role in identifying and setting the priorities for funding and suggest the allocations of the financial resources, right? So if I go further, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. अब अगर पॉलिसी बना दी, उसको इम्प्लीमेंट करा दिया, उसके बाद कई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज भी तो है, लाइक जब हम न्यू पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, उनको करवाना, दैट इज ऑल्सो बीइंग डन बाय KABE, राइट. सो दैट इज बीइंग डन नाउ. Okay, so let's go ahead. So it reviews the existing education policies. जो existing education policies हैं उनको review करना कि उनकी relevancy क्या है, उनकी effectiveness क्या है, उनकी जरूरत है या they need to be modified, right? उनमें कुछ improvement है तो improvement करके उसको modify कर दें, amendment जो भी जरूरत है, the same can be done in order to address the emerging challenges and meet the challenging needs, because every day we come across different challenges, right? Our priorities, they are changing, so accordingly the policies, they are to be changed. We cannot go ahead with the obsolete policies, right? So if I go ahead with the next topic, that is international collaborations. KABE facilitates international collaborations and the partnerships in the education sector, and it promotes exchange programs, research collaborations, sharing of the best practices with the countries to enhance the quality of education in India. Like, we want to improve the quality education, right? So क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, दूसरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसमें ऐड करना पड़ेगा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को और आगे एनहांस और प्रमोट करना होगा, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट करने होंगे. तो उस चीज के लिए केब फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड द पार्टनरशिप, राइट. तो एंड केब फोकसेस, अब जब इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो गया, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो फैकल्टी के लिए क्या है, professional development courses, right? For that, KABE focuses on capacity building initiatives for teachers, administrators, educational institutions, and it emphasizes the professional development programs, training workshops, skill enhancement activities to improve the quality of education delivery. Education बेहतर हो वही तो इसका काम है, एडवाइजरी बोर्ड तो इसीलिए है. तो उस चीज के लिए क्या क्या आप पॉइंट कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, राइट, पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को अमेंड करना इफ रिक्वायर्ड,
and then student exchange programs, faculty exchange program, and now we are talking about capacity building. Now, advocacy and public awareness. KABE plays a very role in advocacy and creating public awareness about educational issues and initiatives. जब तक issues का, initiatives का दुनिया को पता नहीं चलेगा, वो उस तरीके से वो सोचेंगे कैसे? आप collaborate कैसे करोगे दूसरों के साथ? How will you invite the researchers and the scholars to share their own views over there, right? So it provides advocacy and the public awareness. It promotes the importance of education and advocates the policy changes and reforms to address the societal needs, right? As per the society, as per the needs of the hour, any changes, if they are required to be done, that is being promoted and advocated by KABE. Now, collaborative decision making. KABE fosters collaborative decision making by bringing together representatives from central and the state government. Central or state government से जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाकर उनके साथ उनको इनवाइट करके डिसीजन मेकिंग किया जाता है रिलेटेड टू व्हाट, obviously related to any kind of educational issues, for the policy making, for the reforms, for the amendments, right, for the student exchange program. So what all things can be done for the betterment of the education. So it provides actually a platform for the dialogue, consensus building, sharing of the diverse perspectives to shape education policies that reflects the needs and the aspirations of the nation. So everything for the betterment of the education in the country. So monitoring quality standards, that is another responsibility of KABE, right? It sets the benchmarks and the guidelines for the curriculum development, pedagogy, teacher training, assessment practices to ensure a high quality education system across the country. पूरे सारे country में national level पर high quality education का set हो, उस चीज के लिए teacher training कैसी हो, assessment practices कैसी होनी चाहिए, pedagogy कौन सी नई use करनी है, right? Curriculum कैसे develop करना है. It sets the guidelines for that. Now, addressing regional disparities. अब देखिए कि KABE it focuses on addressing regional disparities. Regional disparities कहाँ होती हैं? ये identify करता है areas with the low educational indicators. तो वहां पर गैप को ब्रिज करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सारे स्टूडेंट्स को रिगार्डलेस ऑफ देयर ज्योग्राफिक लोकेशन, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रीजन वाइज जो डिस्पैरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, गैप एनालिसिस या गैप फाइंडिंग करना, फिर उस गैप को ओवरकम करने के लिए सजेशंस या एडवाइस देना, दैट इज बीइंग डन बाय KABE. Now, KABE plays a very important role in the evaluation of the policy impact also. Evaluating the impact of education policies programs, it conducts assessments, studies, research, ताकि पता चले कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो इफेक्टिव है या नहीं, इंटेंडेड उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं. This evaluation helps in refining policies and making necessary adjustments for better outcomes. जब इवेल्युएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, राइट, सर्वेस किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, देन ओनली वी गेट टू नो कि जो पॉलिसी बनाई गई है इज इट इफेक्टिव. अगर नहीं इफेक्टिव है तो चेंज द पॉलिसी एंड मेक अ न्यू वन और मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली. एंड KABE कॉन्ट्रीब्यूट्स द करिकुलम डेवलपमेंट भी बनवाती है. कैसे? गाइडेंस प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशन करती है, उन करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट शुड बी देयर, पेडागोजिकल अप्रोचेस कौन सी होनी चाहिए, राइट? तो करिकुलम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, रेलेवेंट हो एंड नेशनल एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो, उस चीज के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है KABE. एंड टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स टू एनहांस स्किल्स, नॉलेज, pedagogical competencies of the teachers. This focus on teacher development aims to improve teacher quality and the student learning outcome. When the teacher quality is improved through professional development, or obviously the objective is finally to help the students to achieve the desired learning outcomes. Now, KABE promotes inclusive education because it advocates the inclusion of the children with disabilities, marginalized communities, and other vulnerable groups. वो उसके लिए क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है. पॉलिसी बना देना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉलिसी के गाइडलाइंस आती हैं कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सो दैट देयर शुड बी इक्वल एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स and promoting a more inclusive and equitable education system. Technology integration, nothing is possible nowadays without technology. This is a part and parcel of our lives. So it recognizes the importance of technology in education
एंड इट प्रमोट्स इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग में टेक्नोलॉजी को ऐड करना एंड अडेप्टेशन ऑफ डिजिटल टूल्स को यूज करना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करेंगे, राइट, एजुकेशनल आउटकम्स को कैसे अचीव करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगी थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इट एडवाइजेस ऑन दैट ऑल्सो. Also it collaborates with NGOs and the civil societies. KABE collaborates with the non-government organizations, civil society organizations working in the field of education by leveraging expertise, resources, innovative practices to address educational challenges and implement effective policies. तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कोलैबोरेट करेगा एनजीओ के साथ या सिविल सोसाइटीज के साथ ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले, रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पूरे हो सकें, राइट. एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनको भी जो हेल्प चाहिए दे विल बी एबल टू प्रोवाइड रिसोर्सेज, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस. तो दैट फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप इसमें सारे पॉइंट हाईलाइट करेंगे, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम के लिए, टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, राइट, पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट कराना, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को रिवाइज करना, इवेल्युएट कराना, ये सब चीजें किसके रोल हैं? केब के. पॉलिसी एडवोकेसी एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स. इट एंगेजेस इन पॉलिसी एडवोकेसी, पॉलिसीज को बनाकर प्रोसीजर्स बनाना, इम्प्लीमेंट कराना, एडवोकेट कराना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एडवोकेसी करनी है, बताना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि व्हाई वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी, और गैप्स को आइडेंटिफाई करके फिर दूसरों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि ये गैप है और इस गैप को फिल इन करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, ये इसका प्रोसीजर है, ऐसे ये इम्प्लीमेंट होगी, लाइक. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम सम अप इसको करें, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पॉलिसी मेकिंग इन India's education sector. It contributes to policy formulation. आपको जैसे भी बताया, let me highlight, right? पॉलिसी बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक्सेस और इक्विटी को प्रमोट करना, मॉनिटर्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कराना, बना के छोड़ नहीं देना है, और उस चीज के लिए रिसर्च एंड इवेल्युएशन भी करना कि कहाँ पर हमें जरूरत है पॉलिसी बनाने की. जो पॉलिसी बनाई है वो उसको इवेल्युएट करना, सर्वे करके कि वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट. स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना, चाहे वो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना, दे शुड कम एंड डिस्कस. एंड बजटरी रिकमेंडेशंस करना कि फाइनेंस कहाँ पर कितना कैसे लगाना है, क्या चीजों के ऊपर हमें अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज करने हैं, गैप को ब्रिज करना है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को रिव्यू करना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करनी है ताकि स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम हो सके. जब फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, और जब इसने पॉलिसीज बनाई हैं तो उनको एडवोकेट करना, उनको रिफॉर्म करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केब. सो through its multifaceted functions, KABE aims to ensure the development of a robust and inclusive education system in India. Right? तो ये था हमारा KABE. So my dear educators, if you want to know more about what all important questions are there that you are going to appear in M.Ed exam, what all different topics are there in the syllabus, you have to stay tuned to Mentoring the Mentors. Like, subscribe and share. And don't forget to share your valuable comments and maybe a thank you note in the comment section below. Thank you. Have a nice day.